हेलो फ्रेंड्स, मो यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। तो आज देखा करंट 31 जुलाई कौन कौन करंट अफेयर्स अच्छी। अच्छा, इंडिया यूएस एक्सटेंड देयर एग्रीमेंट ऑन ट्रायंगुलर कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स साइंड द सेकेंड अमेंडमेंट टू द स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन ट्रायंगुलर कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो इंडिया यूएस हेलो फ्रेंड्स, मो मो यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। तो आज देखा 31 जुलाई मेन करंट अफेयर्स कौन अच्छी। तो फर्स्ट हूँ इंडिया यूएस एक्सटेंड देयर एग्रीमेंट ऑन ट्रायंगुलर कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स साइंड द सेकेंड अमेंडमेंट टू द स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन ट्रायंगुलर कोऑपरेशन फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो इम्पोर्टेंट हूँ स्टेटमेंट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल क्या मध्य साइन है इंडिया एंड यूएस on the statement of guiding principle. Agreement was signed in November 2014. It underscores the contribution of the India-US partnership to global stability and prosperity. Next, ESA to launch world's first reprogrammable commercial satellite. The European Space Agency is all set to launch the world's first commercially fully reprogrammable satellite, the Eutelsat Quantum on July 30, 2021. तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी कोटा छाड़ुची ना यूटेलसैट क्वांटम. ओके, so that has been developed as the world's first reprogrammable commercial satellite. World's first reprogrammable commercial satellite होची कोटा ना यूटेलसैट क्वांटम जे को जाको छाड़ुची कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी. नेक्स्ट, नाबार्ड सैंक्शंस 446 crores for drinking water projects in districts of Punjab. नाबार्ड पंजाब को माने ड्रिंकिंग वाटर पे इतनी सैंक्शन करची. नाबार्ड टू पंजाब. नेक्स्ट, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021. द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ amendment bill 2021 aims at amending the airport economic Regulatory Authority of India Act 2008. The bill will amend the Airports Economic Regulatory Authority of India 2008 by modifying the definition of major airport under the AERA Act 2008. The amendment of AERA Act 2008 will now refer to an airport with annual passenger traffic as 35 lakh as a major airport as compared to the previous of 15 lakh. तो आगुरी जोटा 15 लाख मेजर एयरपोर्ट कहला एबे सेटा को बढ़े 35 लाख कराई. ता बाद आ किसी मध्य तार किसी चेंजेस होइछि. ओके, नेक्स्ट होछि वर्ल्ड रेंजर्स डे 31 जुलाई. वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 31 जुलाई to commemorate the rangers killed or injured while on duty and to celebrate the work that rangers do to protect the world's natural and cultural heritage. A ranger is a person tasked with preserving and protecting the parklands and natural protected areas. A ranger is typically refers to a forest ranger or a park ranger. It was on this day in 1992 that the International Ranger Federation was founded. Okay, 31 July 1992 रे माने इंटरनेशनल रेंजर फाउंडेशन फाउंड करा जायतला. ओके, and then World Ranger Day was created by the International Ranger Foundation and was first held in 2007. Okay, so next होची 36th edition of Corfat between India and Indonesia begins. The 36th edition of Corfat between India and Indonesia is being held on 30 and 31st July in the Indian Ocean region. The Indian naval ship Sarayu and Indian and Indonesian naval ship KRI Bung Tomo is undertaking the coordination patrol. The basic aim of Corfat is to keep the Indian Ocean region safe and secure for commercial shipping, international trade and conduct of legitimate maritime activities.
तो कोरपेट हूँ को शिप माने को देश भितर हूँ दैट इज बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी राइट नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप on 30th July International Day of Friendship is observed globally on 30th July. This day is celebrated to mark the importance of friends and friendship in life. In 2011 the United Nations General Assembly proclaimed the International Friendship Day with an aim to forge a strong bond of friendship of people of various countries irrespective of race, color, gender and religion. तो एटा मन रखार अच्छे 30 जुलाई हूँ इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप ओके नेक्स्ट हूँ मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस कैंसल बाय आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल द लाइसेंस ऑफ मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मडगांव गोवा as the bank with its current financial position would be unable to pay its present depositors in full. ओके तो मैंने से पैसा न दे पार्थार से कैंसल कर आरबीआई कैंसल कर मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जोटा हूँ गोवार गोटे कोऑपरेटिव बैंक ओके देन नेक्स्ट हूँ वंतिका अग्रवाल बैग्स नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल वंतिका अग्रवाल हैज won the national women's online chess title. She scored 9.5 points from 11 rounds. Arpita Mukherjee of West Bengal took the second spot and Tamil Nadu Srija Seshadri got the third spot in the competition. तो हूँ वर्तिका अग्रवाल हूँ कौन नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल को ए वर्ष जीति गवर्नमेंट अनाउंस 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज 10% कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस इन मेडिकल सीट्स द सेंटर हैज अनाउंस 27% reservation for OBC and a 10% quota for students from the economically weaker sections for undergraduate and postgraduate medical and dental students dental courses under the All India Quota Scheme. The All India Quota Scheme was introduced in 1986 under the direction of the Supreme Court to provide for domicile free merit based to opportunities to students from any state to aspire to study in a good medical college located in another state. Okay. So IIT Hyderabad developed COVID RNA test kits called COVID Home. India's rapid electronic COVID RNA test kit that allows self-testing at home is called COVID Home, has been developed by a research group at the Indian Institute of Technology Hyderabad. The kit has been validated by the Center for Cellular and Molecular Biology and can be used to check for COVID-19 trace at the comfort of home. तो मैंने मन रखा है कोभी होम आईआईटी हैदराबाद ताको डेवलप करछि ओके नेक्स्ट बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड with IBM to set up airport in a box platform. Bangalore Airport International Airport Limited has signed a 10-year partnership with the company IBM to set up the airport in a box. Airport set up in a box सेटा होची कोठी ना होची Bangalore Airport sign करची IBM संगरे set up करा पे airport in a box. The partnership is designed to help Bangalore International Airport improve its productivity, automate its function, technology services, increases operational flexibility to handle future growth in passenger traffic and reduce cost. Okay, तो बायल माने बेंगलोर एटा का IBM सारे ये partnership रे करची. Okay, then also Kerala Police launched Pink Protection Project for Women Security. Also Kerala Police launched a new initiative called the Pink Protection Project for the protection of women in public, private and digital spaces. The Pink Protection Project aims to prevent dowry-related issues, cyberbullying, humiliation in public places. It has 10 components. One of them which is activating the existing Pink police patrol system named Pink. It has 10 components. One of which is activating the existing Pink police patrol system named Pink Janamaitri Beat. तो एटा माने देखा गले बेसिकली केरला पुलिस केरला को देश को राज्य एटा को करछि ना केरला पुलिस एंड दैट इज पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट ए जिनस मन रखा अछि एंड विथ दिस इज टुडेस करंट अफेयर थैंक यू.